हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travel back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2004, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस, फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2004, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस, फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6
award, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Len Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन. रिलीज डेट 22 नवंबर 2004. टाइम 126 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 75 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन. बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं. डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. It received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Len Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन. रिलीज डेट 22 नवंबर 2004. टाइम 126 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 75 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन. बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं. डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. It received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Len Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन. रिलीज डेट 22 नवंबर 2004. टाइम 126 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट 75 मिलियन. बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन. बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं. डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल
Washington, Paula Patton, Jim Caviezel, Val Kilmer, Adam Goldberg, and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग, and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग, and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton,
Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edit by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज डेट 22 नवंबर 2006, रन टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edit by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज डेट 22 नवंबर 2006, रन टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edit by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज डेट 22 नवंबर 2006, रन टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल
Kilmer, Adam Goldberg, and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006 it received mixed reviews from critics and earned $180 million worldwide against its $275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lane Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग, and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006 it received mixed reviews from critics and earned $180 million worldwide against its $275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lane Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग, and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006 it received mixed reviews from critics and earned $180 million worldwide against its $275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim
K.V. Jill, cinematography Paul Cameron, edit by Chris Len Bijon, music by Harry Grayson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution, release date 22 नवंबर 2004, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edit by Chris Len Bijon, music by Harry Grayson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution, release date 22 नवंबर 2004, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edit by Chris Len Bijon, music by Harry Grayson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution, release date 22 नवंबर 2004, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with
whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date
22 नवंबर 2006। रनिंग टाइम 126 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006। रनिंग टाइम 126 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006। रनिंग टाइम 126 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22,
2006 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2007, टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2007, टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2007, टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस, फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस, फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd
मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म वर्ल्ड वाइड फॉर 2006। द फिल्म वाज नॉमिनेटेड फॉर 6 अवार्ड, विनिंग द इंटरनेशनल गोल्ड रील अवार्ड। डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution। रिलीज डेट 22 नवंबर 2006। रनिंग टाइम 126 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग एंड ब्रूस ग्रीनवुड। It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006। 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution। रिलीज डेट 22 नवंबर 2006। रनिंग टाइम 126 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006। 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution। रिलीज डेट 22 नवंबर 2006। रनिंग टाइम 126 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी
Russia and production by Jerry Bruckheimer. The film star Denzel Washington, Paula Patton, Jim Caviezel, Val Kilmer, Adam Goldberg, and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lane Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग, and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lane Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग, and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry
Hitchhiker, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lane Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज डेट 22 नवंबर 2004, टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lane Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज डेट 22 नवंबर 2004, टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lane Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज डेट 22 नवंबर 2004, टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood.
It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजाव्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजाव्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजाव्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजाव्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris
Len Bijon, music by Harry Grayson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Len Bijon, music by Harry Grayson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Len Bijon, music by Harry Grayson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New
Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date
22 नवंबर 2006। रनिंग टाइम 126 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006। रनिंग टाइम 126 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006। रनिंग टाइम 126 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22,
2006 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रन टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रन टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम देजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। देजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रन टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फ्रेंड्स का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
हेलो गाइस, आज हम डेजाव्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजाव्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस, फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजाव्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजाव्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Bruckheimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by Chris Lanvision, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute Beyond Visista Picture Distribution. Release date 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस, फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजाव्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजाव्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रोकेशियर. द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पॉला पैटन, जिम कैविजेल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डवर्ज एंड ब्रूस ग्रीनवुड. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. 2006 it received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd
मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म वर्ल्ड वाइड फॉर 2006 द फिल्म वाज नॉमिनेट फॉर 6 अवार्ड विनिंग द इंटरनेशनल गोल्ड रील अवार्ड। डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिल, टेरी रोसियो, प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुक हेचिमियर, स्टार्टिंग डेंजल वाशिंगटन, वेल क्लीमर, पोला पेटर, ब्रूस ग्रीनवुड, एडम गोल्डबर्ग, जिम केविजिल, सिनेमेटोग्राफी पॉल कैमरॉन, एडिट बाय सीरीज लैन बिजॉन, म्यूजिक बाय हैरी ग्रेगसन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी टचस्टोन पिक्चर, स्कॉट फ्री प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट व्यूअन विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन। रिलीज डेट 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम डेजा व्यू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। डेजा व्यू इज 2006 अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डायरेक्ट बाय टोनी स्कॉट, रिटन बाय विल मार्सिली एंड टेरी रोसिया एंड प्रोडक्शन बाय जेरी ब्रुकेशियर। द फिल्म स्टार डेंजल वाशिंगटन, पोला पैटन, जिम केविजल, वेल क्लीमर, एडवन गोल्डबर्ग and Bruce Greenwood. It involves an ATF agent who travels back in time in an attempt to prevent a domestic terrorist attack that takes place in New Orleans and to save a woman with whom he falls in love. Filming took place in New Orleans after Hurricane Katrina. The film premiered in New York City on November 20, 2006 and was released in the United States and Canada on November 22, 2006. It received mixed reviews from critics and earned 180 million worldwide against its 275 million production budget. It was the 23rd most successful film worldwide for 2006. The film was nominated for 6 awards, winning the International Gold Reel Award. Directed by Tony Scott, written by Will Marshall, Terry Rossio, production by Jerry Brook Hechimer, starring Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Jim Caviezel, cinematography Paul Cameron, edited by series Len Bijon, music by Harry Gregson Williams, production company Touchstone Picture, Scott Free Production, distribute व्यूअन विशिष्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन। रिलीज डेट 22 नवंबर 2006, रनिंग टाइम 126 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 75 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पे 180.6 मिलियन। बस गाइस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।